Giving you my introduction, I'm Surabhi, as Himadri introduced, but more important, what I have been doing. I run the startup called careerguide.com, which helps individuals identify their right careers. Yes, you can call it right calling. Well, it's debatable. Should I call my calling in life as my right career? But yes, that's what we do. I have already coached 5,000 plus career counselors, recipient of 14 plus national and international awards in career guidance, have been consulting Government of India, PMO in career counseling policies and best career guidance practices for the country. And through Career Guide, I've been helping more than 1 million students, every million individuals every year to identify their careers. So that was a bit about me. And I think that's why I can be your right person to talk about finding your calling for sure. But before I begin, I really want all of you to quiz yourself. I have some small set of questions for each one of you, which you don't have to give answers to me, where I want each one of you to answer your own self. Because this entire next 1 hour, our process is we will deep dive in ourselves and try to understand what works for us. Yes, I can do a mix of Hindi and English. Absolutely. क्या काम करता है हमारे लिए? बिल्कुल क्या काम करता है? तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी और एक क्विज है मेरे पास एक क्विज हम डिस्कस करेंगे एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे अपना चैट यूज करे, चैट बॉक्स यूज करे एंड आप चाहो तो चैट पे रिप्लाई करो इन क्वेश्चंस का या अपने आप को रिप्लाई करो आप इन क्वेश्चंस का. So my first question to all of you, are you sure that you are living to full potential? मतलब ये question है आपके लिए. I'm not sure if I'm living up to my full potential. इसका आंसर आपके दिमाग में एक yes हो सकता है या एक no हो सकता है. क्या आपको लगता है कि आप अपना एक full potential पे काम कर रहे हो? Yes, no. Okay. Sonal says yes. Priya says no. आप चाहो तो अगर आप पब्लिक रिप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप अपने मन में ही रिप्लाई करो अपने आप को. नेक्स्ट क्वेश्चन. I don't have anything to look forward on weekends. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मैं वीकेंड पे लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं. इसका आंसर आपके दिमाग में यस हो सकता है, नो हो सकता है. I don't have anything to look forward on weekend. Third, I have no excitement for Mondays. इसका आंसर आपके दिमाग में yes हो सकता है या no हो सकता है. You can answer to yourself or you can answer on chat. I have no excitement for Mondays. Yes or no? Awesome, Sonal. Okay. I had hobbies, but not anymore. I had hobbies, but not anymore. Good, awesome, Priya. The next one. I admire others' life more than my own. And try to be, this is not something, इसका आंसर ना yes या no में जब हम अपने आप को दे रहे हैं तो हम अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए नहीं दे रहे हैं. हम किसी एग्जामिनर से पास होने के लिए नहीं दे रहे हैं या हमको इंटरव्यू क्रैक होने के लिए नहीं दे रहे हैं. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. I'll repeat the question क्योंकि इसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आंसर, ये आपके सेल्फ को चाहिए इसका आंसर. I admire others' life more than my own. Yes or no? I had hobbies but not anymore. Yes and no. I have no excitement for Mondays. Yes and no. I don't have anything to look forward on weekends. Yes and no. I am not sure
if I'm living up to my full potential? And अगर इसमें से किसी एक का भी आंसर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में पहले लगा शायद यस है, राइट, तो दिस सेशन कैन बी हेल्पफुल टू यू। यू नो, जो नेक्स्ट 40 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे या आपस में डिस्कस करेंगे, ये वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं which we have been doing in our life because we were told to do so. There's a set pattern of society. उस सोसाइटी के सेट पैटर्न्स में हम फॉल इन करते हैं। हमें बचपन से कहा जाता है ये सही है, ये करने से सक्सेस है, ये करने से रिस्पेक्ट है, ये करने से डेफिनेशन सक्सेस की, लाइफ के प्रोग्रेस की है। और हम उस एक ढांचे में, एक फ्रेम में हमेशा ढलते जाते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे ओरिजिनल थॉट प्रोसेस अगर डिफरेंट होते हैं इस फ्रेमवर्क से जो हमें बचपन से बताया जाता है, तो हम खुद को डाउट करने लगते हैं। हम डाउट नहीं करते हैं फ्रेमवर्क को जो हमें बताया गया, हम डाउट नहीं करते हैं फैमिली या सोसाइटी को जो हमें बता रही है, हम खुद को डाउट करते हैं। और अगर हम अपने पीयर्स से बात करते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं और वो भी वही लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे मन में जो भी आइडियाज होते हैं हमारी लाइफ के बारे में, हमारे अपने थॉट्स के बारे में, या जो एक नजरिया है, एक आउटलुक है हमारा देखने का लाइफ का, वो फिर हम एक तरफ करते हैं एंड वी से when few lakh people are talking something, ये पक्का सही होगा। And फिर जैसे जैसे we start growing up, we totally forget about those original thoughts we had. वो rebellious thought हो सकता है, वो innovative thought हो सकता है, वो एक idea होता है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि हमें सक्सेस दिखने लगती है। फर्स्ट जॉब आता है, अच्छा कॉलेज आता है, अच्छी इंटर्नशिप आती है, जॉब प्लेसमेंट होती है, फर्स्ट सैलरी आती है, उस फर्स्ट सैलरी से वी बाय गिफ्ट्स फॉर फैमिली मेंबर्स, देन प्रमोशन होता है, देन वी कीप प्रोग्रेसिंग। फिर जो एक, जैसे बचपन में कहते हैं ना, आपका क्या सपना है, राइट, ये पूछना हम भूल जाते हैं व्हेन वी ग्रो अप। व्हाट्स योर ड्रीम? We just forget that growing up. We don't ask that to ourselves anymore. And फिर जो निकल कर आता है is maybe a bit of frustration, maybe a bit of disappointment, maybe feeling relationship brunt भी one of the reasons हो सकता है। आप रिलेशनशिप में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो या आप हैप्पी नहीं हो बिकॉज आपका एक दूसरा एरिया लाइफ का इम्पैक्ट हो रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप्स में निकल रही होती है। ऐसी चीजें आती है, बट देन वी आर नॉट एबल टू क्वेश्चन क्या गलत है। ऐसा ऐसा होता है क्या? और ये सिर्फ मेरे साथ होता है या ये सुरभि के साथ ही सिर्फ होता है ऐसा, राइट? मतलब ये मेरे ख्याल से सबकी कहानी होगी। एट वन और द अदर पॉइंट वी कम अक्रॉस दिस, we totally come across this, and that's why there's been very popular concept, a Japanese concept called ikigai. किसी ने सुना है उसके बारे में? ikigai, a Japanese concept, ikigai. Anybody here who have heard about ikigai? Nobody? किसी ने नहीं सुना ikigai के बारे में? I have heard, ma'am. Oh, cool, very nice. I've read a book about ikigai. Yes, there's a book about ikigai. It says, and उसको आर्ट माना गया है. It's a science as well as an art. वो कहता है ability to find what you're good at, what you're passionate at, what people is willing to pay you for. जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसमें आप पैशनेट भी हो, जिसके लिए लोग पैसे भी देने को तैयार है, जो आपको बहुत खुशी देता है, जिसमें आप बहुत स्ट्रगल करके भी आगे बढ़ना चाहते हो, वो एक स्पॉट हो जाता है इकागाई।
और वो कहते हैं इतना इजी नहीं है ये ढूंढना। चलो मैं एक इकागाई की छोटी सी फ्रेम दिखाती हूँ। You will see here. Just a second. You will see here what you love, what the world needs, what you can be paid for, and what you're good at. What you love and what you're good at, वो passion बन जाता है. मुझे पसंद भी है और I'm very good at it. What you're good at, and जिसके लिए पे भी किया जा सकता है. अच्छे हो, पे करते हैं, पे भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि you're good at, वो प्रोफेशन बन जाता है. And what you love and what world needs, वो मिशन बन जाता है. And पूरा ये जापानीज साइंस कहो या आर्ट कहो, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाते. नॉट लाइक इंडिया की तरह एक जेई क्रैक कर लिया, एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, एक कॉलेज में चले गए और फिर एक जॉब ले लिया, फिर शादी कर ली, फिर सेटल हो गए. ये जो बहुत स्टैंडर्ड रूटीन है, वो कंटिन्यूअसली देखते रहते हमारा इकागाई क्या है, हमारे लिए वो स्वीट स्पॉट क्या है. एंड यस, जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ते हो, ये चेंज होता है. हो सकता है आपकी कॉलिंग, आपका इकागाई, आपका ड्रीम करियर, आपके एम्बिशंस बदल सकते हैं, क्योंकि आपका आउटलुक बदल रहा है लाइफ की तरफ. टोटली आपका आउटलुक बदल रहा है. जब हम कॉलेज में रहते हैं, हमें सिर्फ एक इंटर्नशिप मिल जाए समर के लिए, शायद वही कॉलिंग होती है उस 6 महीने. Anything which can give me 15,000 stipend, which will be my pocket money, I'll just love it. First job जब चाहिए होता है, we just want that first job. Badly we want that first job. And maybe 2,000 रुपए, 5,000 रुपए के लिए डिफरेंस के लिए भी people end up switching jobs then. होता है, right? Because उस टाइम वही मेरा कॉलिंग है लाइफ का. मुझे बस इंश्योर करना है कि मे बी मेरे कजन से ज्यादा पैकेज की जॉब मिलनी है, बस वही. एंड जब उसको 2 साल के बाद पीछे मुड़कर देखो ना, कि शायद उस छोटे से इंक्रीमेंटल पैकेज के लिए जो जॉब आपने छोड़ दी या पिक की, एंड देन यू laugh at it and then you think maybe it doesn't matter anymore. Many of you must be looking to, for rescaling, looking at some sort of advanced programs, grow in career. The question is why? And I would want to request all of you, आप ना एक अपने पास एक डायरी रखो या एक फोन में मेमो रखो. Observation, if you really want to understand what's my calling is, can you start observing small things which you do in your life? Very small things. Like, example, when you're doing something, notice if that's making you feel good. Let's say if your boss gives you a task, was that the task you enjoyed? You enjoy or you don't enjoy? And my dear friends, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 100% वही टास्क करना है जो आप enjoy हमेशा करते हो. समुद्र मंथन की कहानी सुनी है आप लोगों ने? Do anybody knows what समुद्र मंथन is? Anybody knows? Have read mythology? Heard any story? अच्छा, ये पता है ना शिवा का कि यहाँ पे नीला है because there's wish poison in the neck? Yes. Anybody yes, knows that? Yes. Yes. You know, right? Lord Shiva, poison. And anybody knows that there was Deva and Asuras, demons and gods who were fighting and they were stirring ocean. When they were stirring ocean, then Amrit came, Lakshmi came, Kamdhenu Gai came, poison or wish came. But when Amrit came, Amrit would have made everybody forever livable.
Who would take? Would God take? Would demons take? Then poison came. So it turned out whoever will take poison will take Amrit. And that's why Shiva drank the poison, kept it in his throat, and gods got Amrit. What I'm trying to convey here is, if you want all good tasks, you might have to take some tasks which are boring, which is like that wish and poison. You will never have 100% my perfect dream tasks. Correct. That's a rule. That's a rule of the best of the world in the world. You might become prime ministers, presidents, billion-dollar unicorn startup founders. There would be something you don't like to do, but you have to do, because doing that will give you more opportunities to do the work which you like to do. तो बिल्कुल कभी मत सोचो कि 100% मुझे वही टास्क करना है, वही काम करना है जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. So जब मैं आपको कह रही हूँ ना, एक डायरी और एक मेमो रखो जिसमें आप ऑब्जर्व करो कौन सी एक्टिविटी जब आप करते हो ना, आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचते हो. You know what is state of flow? State of flow is आपको पता ही नहीं चलता टाइम कब पास हो गया. That is state of flow. जैसे एक बहुत अच्छी मूवी हमने देखी, पता ही नहीं चलता है कब टाइम पास हो गया. बट एक बोरिंग मूवी देखी, वो आधा घंटा भी बहुत मुश्किल हो जाता है. So notice, point down all the things which you do. And वो things ये भी हो सकता है जो आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. Write it down. क्योंकि जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटीज है ना, हम इतने बिजी हैं लाइफ में कि हम भूल जाते हैं वो करना. हम बिल्कुल भूल जाते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोड में, और हम वैलिडेशन ढूंढते हैं औरों से, हम वैलिडेशन ढूंढते हैं सोशल मीडिया से. किसी ने कहा अच्छा है तभी अच्छा है, यही होता है. क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है. When and what to write in diary? When? अभी से सोना है. डायरी नहीं चाहिए मुझे, छोटा सा मेमो चाहिए, छोटी सी पॉकेट डायरी रख लो. उसमें मैं चाहती हूँ आप ऑब्जर्वेशन नोट करो अपने. मैं कौन सा टास्क या कौन सी एक्टिविटी आपने किया, तो पहला ऑब्जर्वेशन, आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में हो. स्टेट ऑफ फ्लो का मतलब टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. और आप उसमें डिवाइड कर लो, वीकेंड एक्टिविटीज, वीकडे एक्टिविटीज, और ऑफिस और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड पर्सनल लेवल एक्टिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू व्हाई. पर्सनल एक्टिविटी भी क्यों इंपॉर्टेंट है. दूसरा, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा टास्क आपको फील गुड करवाता है, अंदर से हैप्पीनेस दे रहा है, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. So state of flow, feeling good, right? तीसरा, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं हुआ. बहुत लाउड म्यूजिक चल रही है बगल में, पता ही नहीं चला, मैं तो काम कर रही हूँ, वो एक्टिविटी कर रही हूँ. लोग आके पीछे से कुछ भी बोलते जाए, मुझे सुनाई नहीं दिया. आई एम सो बिजी इनटू दैट एक्टिविटी. You need to observe, and you need to have at least 10 to 15 such observation in next 1 week. So, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. मैंने कैसे स्टार्टअप किया, मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे, और कैसे मुझे पक्का यकीन था कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगी तो आई विल डू गुड. सो आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम बिट्स पिलानी. मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, एंड मैंने हाई एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जिसमें मैंने एप्पल के फर्स्ट आईफोन चिपसेट पे भी काम किया हुआ है. तो एंड मैं बहुत श्योर थी जब मैंने अपना जॉब क्विट किया कि आई विल लाइक दिस, आई विल नॉट फील बोर्ड. व्हाई? क्योंकि आई वेंट इनटू दिस एक्टिविटी ऑफ डायरी मेकिंग एंड नोटिंग डाउन द एक्टिविटी. सो एक बार मेरे कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस था,
जिसमें 5-6 स्पीकर्स आए थे बाहर से, स्टार्टअप फाउंडर्स आए थे, एंड वो 2 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव था। मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई लाइक्ड इट। मैंने सोचा अटेंड करूंगी, बट उसके दूसरे दिन आई हैड फाइनल एग्जाम्स एंड वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट्स। यू वोंट बिलीव, जो लेक्चर्स होते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, 45 मिनट्स बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी ने भी यहाँ पे इंजीनियरिंग की है तो मुश्किल होता है, टफ होता है, बोरिंग होता है, मोस्टली आई से बोरिंग। बट जब मैं उस एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में बैठी 8 hours, I got up in the morning at 9 o'clock. I went there, I sat there, I listened to all these lectures. तो वो भी लेक्चर ही था, लोग आके बोल रहे थे। Until 6 o'clock I did it. I enjoyed it. मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं 8 घंटे बैठी हूँ वहां। I'm interacting, I'm participating, I'm thinking, पूरा mind stimulated लगा मुझे। And the best part is, मुझे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, तो मैंने पूरे एग्जाम की तैयारी, फाइनल एग्जाम का जो पेपर था, कॉन्फ्रेंस से पहले फिनिश किया। नहीं तो जनरली होता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले किसी तरह सिलेबस फिनिश करना है, किया। एंड दैट वाज द एग्जाम जिसमें मैंने मेरे बिट्स पिलानी के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट स्कोर किया, A+। दिस गेव मी एंड दिस, एक बार नहीं, ये ऐसा फिर मैंने रिपीट 2-3 बार किया। आई सेड दिस इज फैंटास्टिक टू बी विद स्टार्टअप फाउंडर्स, टू बी विद एंटरप्रेन्योर्स। मैं ज्यादा प्लान्ड हो जाती हूँ अपने एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए। इवन वो बोरिंग है, एग्जाम्स बोरिंग था, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बोरिंग थे, बट मुझे वो भी करना है और ये भी करना है क्योंकि वो करना मजबूरी है। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन मुझे आप लोगों से चाहिए, या आपको अगर किसी को बताना है कि कैसे ढूंढे अपना इकागाई, कैसे ढूंढे अपनी कॉलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना। देखो फ्लो ऑफ स्टेट में हो, देखो फील गुड फैक्टर आ रहा है अंदर से, देखो डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रही है, राइट। एंड रिमेंबर, और उस चीज को करने के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से भी निकलने को रेडी हो। कंफर्ट जोन से भी निकलोगे आप, क्यों ना। कभी कभी अगर ट्रिप पे जाना है, 5 बजे उठना बड़ा मुश्किल होता है विंटर्स में, बट ट्रिप पे जाना है तो हम तो उठेंगे, 5 बजे भी उठ के जाएंगे। That's getting out of comfort zone because you're liking doing that, you want to go and do that trip. So क्या आप कंफर्ट जोन से भी निकल रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पॉज करती हूँ यहाँ पे। मीनवाइल कोई भी कमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज चैट पे डालिए, क्योंकि इसी से कंटिन्यूड इसके बाद आई हैव वेरी अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई पर्सनली फील very, very inspired by that. Any comment, any observation, any remarks, any questions? Okay, nothing? Are we good till here? Show me a show of smileys on chat so I know none of you are sleeping. अब ये ना कहो कि कॉलिंग इन लाइफ मेरा तो सोना है, तो अब मैं सोने जा रहा हूं। आपने कहा इस एक्टिविटी के फ्लो ऑफ स्टेट में आ गए, तो अब हम सोने चले गए, हम तो फ्लो ऑफ स्टेट में आ गए। Right? Awesome. I'm getting to see some smileys. Thank you, Sachin, Jasim, Pankaj, Bhargav, Sonal. All right. So rest of them are in flow of state, of sleeping maybe. Okay. So Priya has a question. How can I be effective communicator? How can I work on voice of tone? Priya, very interesting question. इनफैक्ट ये उतना ही रेलेवेंट है जैसे हिमाद्री ने कहा सेल्स हर तरफ जरूरत है, वैसे कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर तरफ जरूरत है। आपको पता है प्रिया, अमिताभ बच्चन से जितना बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है,
और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज भी जब मैं सेट पे जाता हूं ना, मैं रिहर्सल करके जाता हूं. तो योर शॉर्ट आंसर इज, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो रिहर्सल एंड प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करो, आप फोन पे रिकॉर्डिंग करके वॉइस टोन की प्रैक्टिस करो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके वॉइस टोन की प्रैक्टिस करो. अगर आपके पास कोई सामने नहीं मिल रहा है, आप पहले प्रैक्टिस करो मिरर के आगे वॉइस रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके. ये सारी चीजें ऐसी हैं प्रिया, जितना आप प्रैक्टिस करोगे और जितना आप डे टू डे लाइफ में यूज में डालोगे, वो उतना बेटर होगा. दैट्स ट्रू, वो उतना बेटर होगा. Am I clear, Priya? I hope I answered. Thank you. Any more question before I go to my favorite story? All right, no more. अच्छा, एक चीज आप लोग समझते हो, कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है what will give me more money. जनरली जब मेरे पास इंडिविजुअल्स आते हैं ना, स्पेशली स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स जब आते हैं ना, वो पता है मुझे क्या कहते हैं, या पेरेंट्स जब आते हैं, आप प्लीज बता दो हमारे बच्चे के लिए ऐसा करियर जिसमें 9 to 3 काम करना पड़े, एसी में बैठना पड़े और ₹1,00,000 महीना भी मिल जाए. मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बट कॉल, मेरा ये कहने का मतलब था यहाँ पे, कॉलिंग नॉट नेसेसरी इज जस्ट योर करियर. नॉट नेसेसरी करियर को हम कॉलिंग बोले या कॉलिंग को करियर बोले, बट यस, करियर जो है, जो हम आप करते हो उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, एंड वो अगर आपकी कॉलिंग हो गई, वो आपका लाइफ का पर्पस है, तो नथिंग मोर ब्यूटिफुल. एंड ट्रस्ट मी, yes Sonal, and trust me, I am blessed. I find my life calling in my career, and I am blessed because I fought for this. It was not easy. It was not easy to quit a high paying technology job. It was not easy to live for more than 4 to 5 years in financial limitations. It was not easy to stand up for family and society and say, I want to do this, and marriage is not important to me currently. It was not easy, but when I look back, I feel I'm blessed that I fought for all those things. And yes, agar calling aapka career hai, to nothing like it. It's very beautiful. But बहुत बार जरूरी नहीं है कि आपकी कॉलिंग आपकी करियर हो सके. नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है यू जस्ट लव बेकिंग अमेजिंग कपकेक्स, बहुत मजा आता है आपको, बट आप एक बहुत ही बड़े कंपनी में सेल्स हेड हो एंड यू आर ड्रॉइंग वेरी हैंडसम पैकेज, but you love baking those cakes so much कि आप हर संडे, हर वीकेंड बैठ के केक बना रहे हो, and then you are going to orphanages and old age homes और वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. बट अगर वो आपकी कॉलिंग है, यू वांट टू कनेक्ट विथ पीपल, आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे कहीं ना कहीं से. एंड दिस इज वेयर माई स्टोरी कम्स. दिस इज वेयर माई स्टोरी कम्स. स्टोरी ऑफ हर्षा भोगले. आप लोग को पता है हु इज हर्षा भोगले? Yes, ma'am. You guys know. All right, fantastic. He is a cricket commentator, very popular cricket commentator. Now, funny thing is, क्या क्रिकेट कमेंट्री का कोई कोर्स होता है?
कि वो बन गया क्रिकेट कमेंटेटर, वो गया और क्रिकेट कमेंटेटर बन गया एंड सो पॉपुलर. इंटरेस्टिंगली, he is a chemical engineer. You're right, Bhargav. He's a chemical engineer from Osmania University, Hyderabad. फिर उसके बाद he has studied in one of the best business school of the country, IIM Ahmedabad. Oh my God, engineer. उसके बाद IIM Ahmedabad. ये क्रिकेट कमेंट्री का ब्लेसिंग कहां से आ गया? And then he worked with the advertising company. Where do you think ये पूरी जर्नी में क्रिकेट कमेंट्री कहां से आ गया होगा? क्योंकि शायद वो IIM अहमदाबाद का बिजनेस गाय एंड टॉप नॉच फ्यू क्रॉस की सैलरी पे भी रहता, तो शायद हम उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे होते, ये लोग नहीं जान रहे होते. इंटरेस्टिंग थिंग इज हर्षा भोगले को स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से. वो स्कूल डेज से ऑल इंडिया रेडियो पे, ऑल नहीं हैदराबाद रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री करता था. उसे शौक था. He would pick every sports magazine in the world, जो भी उसके हाथ में आता था, he would read it. He was so knowledgeable about sports. He went and he said, मैं कर सकता हूँ आपके लिए कमेंट्री and मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए. Why not? And कोई भी अपॉर्चुनिटी होती थी शहर में, चाहे वो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, he would do it. He would go contribute and say मैं करूंगा. When he was in IIM Ahmedabad also, he would not miss any opportunity to do it. After advertising, because sports mein his calling was there, but his journey went through engineering and management, but doesn't mean उसने अपनी calling छोड़ दी. वो weekends पे करता रहा, जब opportunity मिला करता रहा. He didn't say मुझे इतने पैसे दो तब मैं करूंगा. जो कॉलिंग होती है और कॉलिंग के लिए जब अपॉर्चुनिटी होती है, तब आप ये नहीं बोलते मुझे इतने पैसे दो तभी हम कर पाएंगे. And then he had all this portfolio, he had all these recordings of his commentary. Once he got a sign up from BBC, he left his previous job. And that's when he became a full-time cricket commentator. And that's when he became one of the best commentators, and we know him. What I'm trying to tell all of you, दिल में दबाकर मत बैठो आप, मुझे ये करना है बट हम कैसे कर सके, पैसे नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, एक करंट जॉब है, पता नहीं कैसे करें. वीकेंड्स पे पोस्ट ऑफिस किसी ने नहीं रोका है. मनी कैन नेवर बी अ कंसर्न जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो. आप खुद को अगर एक्सक्यूज दे रहे हो तब दूसरी बात है. और ये हमारी ना ह्यूमन नेचर है. हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं, हम खुद को रीजन देते हैं कि हमारी कंडीशन सही नहीं है, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मे बी हम स्मॉल टाउन से हैं, मे बी मेरे फैमिली सिचुएशन ही नहीं. ये एक्सक्यूज माइंड बिल्ड्स अप फॉर अस. बट अगर वो आपका पैशन है, वो आपकी कॉलिंग है, वो आपका आइडियल करियर है, यू विल फाइट फॉर इट. यू विल गो आउट ऑफ योर वे टू डू इट. You guys know Shiva trilogy, Amish Tripathi, Secrets of Naga? Yes, we did. I did. He was a Both 3 financial editions. banker. Yeah. He would write his first book. First 2 books उसने लिखी है ऑफिस से आते वक्त, लौटते वक्त, उस टाइम पे. और जब 3rd book रिलीज हो गई ना, then he quit his job. His calling is being an author, but he did not wait कि मैं सिर्फ यही करूंगा.
He went and continued with his job, and when there was a perfect time, he took it. And then it became a full-time career. And yes, kids these days are more blessed to merge their calling with career in a very early age. Instagrammer ban gaye, influencer ban gaye, right? Astronaut ban gaye, ghar walon ne bhej bhi diya NASA, US. So the opportunities are so limitless. Totally limitless. Okay, let's do this exercise. If you want to type on chat, you can. If you don't want, then it's fine. A quick note, agar aapke paas pen paper hai, to you can use pen and paper. If you have a phone memo, you can use phone memo. And the activity is, tell yourself, write down, if I have given an opportunity today to do dash. Dash is fill in the blanks. I will like to do it, and fill that dash. If I have been given an opportunity to do dash, I will like to do it. वो dash क्या है आपके लिए? Take a minute. Take a minute. Think. आपको reply करना है तो आप कर सकते हो. नहीं करना है तो it's okay. But more important is, आप मुझे या अपने आप को impress करने के लिए वो dash नहीं fill करो. Impress किसी को नहीं करना. Perfect answer नहीं चाहिए. Authentic answer चाहिए. And yes, ये भी possibility है. आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा उस dash को fill करने. तो just leave it. But this is an exercise. बहुत immediate जरूरी नहीं है answer आ सकता है. Professional dance. There's some people who want to speak. That's beautiful. मैंने सोचा नहीं था कोई honest answers देंगे यहाँ पे या कोई chat पे लिखेगा. Shumela says, I want to be explorer, traveling, meeting people, learn difficult, learn unseen things about people, about world. तृप्ति, आप अभी क्या करते हो? I'm in sales. You are in sales and you want to be a professional dancer. So before that, can I ask, are you a hobbies dancer as of now? Yes. So what sort of activities you do? What sort of dancing programs you do? Yeah, I have learned like hip hop, classical dances when I was in school. And later again, when I grew up, like education and then my classes, extracurricular activities, I didn't get much time. But still, even at home, I do dance like whenever I feel like free doing it. Whenever you feel like free doing it. और आप बताओ सबको कि कब आपको ये फीलिंग आती है कि मैं फ्री और करूं, कि सेल्स क्लाइंट आपको करने नहीं देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. Like when I'm home, like I'm happy, Saturday, Sunday morning, ऐसा कर लेती हूँ kind of. Saturday, Sunday आप करते हो regular? Yeah. हाँ, तो Saturday, Sunday आप happy होते हैं, weekdays आप happy नहीं होते हो ना? नहीं, that time I am tired mostly. Tired, fine, ठीक है. And तो आपका कोई Instagram page है, YouTube channel है? No. Okay, so here Trupti, आपने उस dash में fill किया, if you have an opportunity, then you would want to be a professional dancer or do professional dancing. But interesting thing is, Trupti, आपके पास तो opportunity है. YouTube उठाओ, अपना कैमरा डाल लो और डांस अपलोड करो और बताओ सबको, पूछो सबसे कैसा लगा. शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ,
That's exactly professional dancer. Why are you waiting for somebody to give a contract or stage show or some money for you to do that? आज के डेट में रील्स से बड़ा प्रोफेशनल डांसिंग शो नहीं है कोई, इंस्टा रील्स से. So but what is stopping you to put your dance to the world? कोई sort of fear? Nobody. I think I'm stopping myself. So this is my story where I talked to you about Amish Tripathi and Harsha Bhogle. And you will realize हमारी जो calling होती है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम और स्टॉप गेट ना हम खुद होते हैं. और एक्सक्यूज हम जॉब पे, एक्सक्यूज हम बैड बॉस पे, एक्सक्यूज हम मेट्रो की ट्रैफिक पे, और मेड घर नहीं आई खाना बनाने पे, या मम्मी को बुरा लगेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, हाँ उन पे डालते. यस, अपने एजुकेशन सिस्टम या वर्ल्ड ऑफ वर्क पे डालते. हो सकता है शायद हम 6 साल पहले ये डिस्कशन कर रहे होते, 10 साल पहले ये डिस्कशन कर रहे होते, तो मैं कहती तृप्ति हमें फिर चलो कांटेक्ट करते हैं लोकल डांसिंग बॉडीज से. करेक्ट है ना? बट आज के डेट में है ही नहीं. एंड प्रॉब्लम विद वी पीपल इन दिस एज इज दैट हमें उस कंडीशनिंग से निकल के नए जनरेशन वाली कंडीशनिंग में जानी है जो इंटरनेट एंड डिजिटल है, जो लिमिटलेस है. We grew up without the digital possibilities, right? Correct. और हमें उस डिजिटल पॉसिबिलिटीज में मर्ज करना है अपनी थिंकिंग को. एबिलिटीज है उस डिजिटल पॉसिबिलिटी की, बट हम सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम ग्रो अप हुए हैं 20-25 साल. अच्छा ये आएगी अपॉर्चुनिटी, अच्छा ये आएगा, ऐसे ये होगा, तब ये कोई आएगा. सो तृप्ति, we should start. I'll start following you, and I want to see you some of your reels. Let's get this done. Sure, ma'am. Awesome. Okay, Shumela says she wants to explore travel meetings. People learn difficult and unseen things. Shumela, and what you do now? Okay. Yeah, I work as salesperson. My mobile is not getting scrolled because I'm washing clothes. और मेरे साबुन के हाथ में मुझे वीडियो ऑन करने को नहीं हो रहा है. That's okay. That's okay. So you're a sales professional and you want to meet a lot of people. Sunday मैं laundry ले, लेकिन कल मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं आज कपड़े धो रही हूँ. Achha, that's nice, yeah. That's very nice that you're sitting at home listening to this. And this is so amazing. You spoke about this. आप नहीं बताते तो हमें पता आपका मोबाइल मैंने मशीन के ऊपर रखा है. Very nice. नहीं तो आप मुझे ये बताओ, आप मिलना चाहते हो इंटरेस्टिंग लोगों से, राइट? है ना? मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद से ना मैंने बहुत घूमना शुरू किया है ना. मैंने सोलो ट्रिप्स करी है बहुत ज्यादा. 3 बार कश्मीर जाके आई, तो गोवा जाके आई. I'm a very solo person. I don't know why. Maybe situations have come up like this. So when those situations you understand, no females का जो phase आता है, and then you don't have like you are left on yourself, and then you feel like you need somebody. So I would just like maybe I don't know 100%, or maybe I'm still not able to achieve that वो निर्वाणा phase होता है ना, जिसमें कोई खुशी या कोई दुख महसूस होने वाला लेवल नहीं रहता है. देखो निर्वाणा phase नहीं मिलने वाला पहली बात तो. वो रीच करने में तो अभी काफी बात. Right. So I think meeting and traveling you are already doing as a solo traveler. Maybe in your sales profile you can also try, seeing that how you can start traveling to meet people. It's very scary thing, and most of the time people think, अरे हम अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे मजा आएगा, अकेले कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कोई होना चाहिए. और नहीं मिलता है ना, तो people skip it. और या तो वो इंतजार करते रहते हैं कि जब कोई आएगा तब जाएंगे. Like why? मुझे तो इंतजार नहीं. I am 35 now. I am single. I am the only child of my parents. They live with me. They love me. और आज भी उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करा. मिलते हैं और मुझसे मर्जी लेते हैं कि मैं किससे करना चाहती हूँ. So the firstly what you said, even I feel alhamdulillah very much blessed कि Allah has
given me in my community Fantastic. such a blessed family, because you मतलब know. मुझे ऐसा क्यों लगता है Hmm. आपको अपनी स्टोरी ना बतानी चाहिए बाहर लोगों को? क्या आप अपने मेरी ट्रैवल स्टोरी बहुत पिंची है. हाफ ऑफ द पीपल वुड हैव हैंग देमसेल्फ. मुझे ऐसा लगता है जो द फेजेस दैट आई बी वेरी शार्प एंड वेरी डार्क in those words, but those words cannot be framed otherwise. I feel what I've been through, people would have not been able to live through that. but But that yes, might give strength to a lot of people. एक चीज दूसरी चीज हो सकता है you don't want to talk about those dark sides, but what about your travel, solo travel? You might that side doesn't matter, because that's what the thing I'm doing to overcome that shit. So you should never recollect the negative things in life, as said. You should always look at the positive side, which I'm trying to inculcate in myself, though it's difficult. Yes, I'm mentally, health wise, everything is messed up. I'm very open to confess it. And I think no harm and no shame in admitting that you are mentally, emotionally, and physically messed up. But still, to survive through all that is what makes you a human, and you should always fight for it. देखो लाइफ बहुत प्रेशियस होती है मेरे को लगता है, तो इसलिए मैं जब सोलो ट्रैवल करती हूँ ना, मैंने सोलो ट्रैवल कैसे शुरू करा, आई वांटेड टू गो विद माय सेल्फ एंड सी कि कैसा होता है. कुछ नहीं होगा, आप अच्छे हो, सब अच्छे हैं. बी स्मार्ट, बी अलर्ट, बी केयरफुल. जो सोलो ट्रैवल की टिप्स होती है अगर मैं दूं लोगों को, बस दैट्स इट. जो मुझे बताओ आप अपनी फोटोज अपलोड करते हो? हाँ मैं करती हूँ ना. आई विल सेंड यू माय इंस्टा आईडी. आई विल अपलोड द फोटो. आई थिंक आपने बोला ना टिप्स फॉर सोलो ट्रैवलिंग. Yeah. You should do an entire series on that. Yeah, I know. You Because should do then that. I That have would be been, amazing. I have been That would tricked be not otherwise. amazing. I have been tricked also, not otherwise, but Fantastic. Loving this entire conversation, but I think I'll need to move to the next person. I would love to connect, and maybe you should share your Insta chat for hours. right. आप अपनी Insta handle chat पे सबके लिए share कर दे, Shamila. Yeah, sure. है ना? All right. So Kakshi says, if given a chance, I would have participated in an international beauty pageant and then kept on modeling. Wow. Who's Kakshi? I really want to see you. Come on, I'm here. Oh, hi. You're already here. So if given a... Okay. I have pinned you. All right. Okay. And what place are you based, Kakshi? I am in Vadodara. Shweta, I'm in Vadodara. And professionally, I'm an image consultant. Wow. So the reason I always have this thrive was I am a very heighted person. I am 5'8". Now that I'm married and I have a child, I've put on some weight. But when I was in my early days, I was very lean. No, you're still lean. You're still lean. And I have my brother, like a family who is all heighted, 6'1", 6'2". This is what the ideal height we all have. And then after he finished his studies, he said, I'll be in acting. And my parents did allow him doing that. We being a conservative Marwadi family, girls were not allowed to be a part of those industries. But fortunately, there was one incident. I became Miss Maharashtra, and in that I was with my brother. My brother was Mr. Maharashtra and I was Miss Maharashtra. And a lot of people came and told my father, Sharma, you should allow your daughter to be there. And he said, no, I won't. And this is not what we can allow her doing. I did my MBA in marketing thinking I would at least be a part of ad agencies where I can be around those things. That didn't happen. I went into educational field. I have served as a principal in school for past 8 years. Post Corona, I realized this is not what I want to do. I want bigger and better for me. And image consultancy, that platform gave me that thing to achieve. But again, I have that glitch. कि अगर मैं किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती, I would have really made the country and myself proud. So this is what I go back and do it. Thank you for sharing your story. It's so heartwarming. And Yeah. I genuinely think you have come a long way. I mean, you have won Miss Maharashtra. You have been principal of a school, and I'm sure with your personality and with your grace, parents and children would have loved interacting. And do you know that because you were present in front of them, सबसे ज़्यादा
impressionable mind, in teenagers ka hota hai, in students ka hota hai. And looking at your grace, the way you must be carrying, the way you must be talking to them, आपने हर एक point पे उनको inspire किया होगा. Totally हर एक point पे आपने उनको influence किया होगा. आपने अदिति गोवत्रिकर का नाम सुना है? Yeah. She was Mrs. India, right? So there are a lot of pageants which happens for like Mrs. title. And Yeah. I think अब आपकी family की, I understand traditional Marwari families are okay, शादी के बाद तुम कुछ भी करो, right? So maybe you can try that, right? I think not try, you should do that. Absolutely. मतलब just जाओ करो उसको, बिल्कुल सोचो मत. And I think you can still do. Again, I'll get back into the world of possibilities of digital. Digital ने इतना कुछ ओपन कर दिया है हमारे लिए, इतना कुछ ओपन कर दिया है. आप अगर देखोगे ना, आज के डेट में मॉडल्स और रैंप वॉकिंग से ज्यादा, ये इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट से ज्यादा, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को बताते हैं कैसे चलना है या कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे ड्रेसअप होना है, जो खड़े होकर फोटोज लेते हैं. और आज के डेट में ना सारे मॉडलिंग फंक्शंस में ना रैंप वॉकिंग में इन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने लगे इंस्टेड ऑफ मॉडल्स. So Kakshi, I really want, अगर आप एक अपना पेज बनाओ इंस्टा पे, right? Start and you will find so many people doing this, so many women, so many ladies, so many girls doing it. And in fact, purpose driven हो सकता है. Not necessary modeling का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा ग्लैमरस या ऑब्सीन साइड पे हो जो हमारे फैमिलीज देखते हैं, राइट? आप बहुत डिफरेंट तरीके से, आई हैव सीन पेजेस ऑफ विमेन जो सिर्फ एथनिक ड्रेसिंग पे बात करते हैं, सिर्फ एथनिक बताते हैं, या कुछ करते हैं सिर्फ प्रोफेशनल ड्रेसिंग कैसे करें, राइट? बहुत सारे थीम्स आप पिक कर सकते हो. एंड उस थीम्स पे आप ना, you should check this girl Prerna Chhabra, and a lot of these people on Instagram जो बहुत बेसिक कुछ बनाते, अफोर्डेबल 500 रुपए में आप अपने आप को कैसे पार्टी की तरह ड्रेस करो, राइट? And because you look good, you have amazing screen presence, this you will realize will be better than modeling. And you will realize you will get modeling. I know this, I'm forgetting the name. She started a page and she started talking about fashion and style, despite she being super overweight, I think Sakshi something. Sakshi, yeah. Super overweight. And she does it, and now people are calling her everywhere, right? Like they and all, she had participated. Yes, all the ramp folks. So I think that's where you belong now. You should start thinking about your digital strategy, and especially with image consultant, it will become very, very easy for you. Yeah. Right. Thank you so much. All right. In fact, I think we are almost about to finish. We are just 4-5 minutes left. Any more conversation? And I'm just loving this entire conversation. So many heartfelt stories. So beautiful. Absolutely beautiful. And thanks for coming forward and sharing it. It's heartening. Yes. So I think, Bhargav, what is that you wrote in your dash? Do you want to share with everybody or no? That's your honest reply to yourself. Hello. Yes. Actually, I did not. I was thinking for something, but I did not get anything to write. Okay. So I think, and what you do? Sorry. Actually, I'm a mechanical engineer. So right now I'm working in a healthcare solutions, but I'm looking for changing my career. So that is why for that purpose, there was some question in my mind. It was whether this industry will be for me or not. So that is why, Okay. And where you said you wanted to switch? Sales and marketing. Sales and marketing. All right, that's fantastic, because most of the engineers do pretty well into marketing and sales.
And when you jump in, I would want you to think, spend weekend if you really wanted to write into that dash. I know at times it's not easy to fill that dash, you know. No, And every I have different things for dash, but I don't know how to present that, but whether it is relevant or not, because my interest lies to, basically it is to learn about the Vedic, our knowledge, all those texts, and then, make it useful for other people's. That I okay. had in my Can I mind, but stop you here, Bhargav? You said that I don't know whether that's relevant or not, whether it's right way to present or not. I don't want to think all of it. If you have 5 things to fill in dash, but don't keep it in mind. I want you to write it down with pen. That's important. okay, Don't care about whether it's relevant or not. Write okay, it down. Remember, friends, writing gives more clarity than think. You think, and when you write, things are more crystal clear than you just think. You know, it's very important. It's very, very important. So I would want Bhargav you to write those. Absolutely okay, write it. And it's more important. Don't care about it. As been saying, whether it's right, wrong, you don't care. Just write it down. Okay. And another exercise I want you to do is that memo I said, where I said, can you observe 2, 3, 5, 10 to 15 activities over next 7 days? What you are doing in your day-to-day life, which is bringing state of flow, feel good factor, no distraction. Right? okay. And I want you to observe and make that point. And when you do that, correlate this dash pointers and this one. Okay, that dash Everything pointer should be and the written. activities which Yes, activities that you started enjoying and the activities you have done this, but I want it in written, Bhargav. That's one. Another important thing, Bhargav, is that at times when if you're saying I have 4, 5 activities in my head, all right, how about you just go and do those activities as a hobby or as a experiment or as part-time? When you say, I want to learn about Vedic mythology and Vedic technologies, right? Did you start reading something? I have, many a times I also read the books also, but the thing is I need a proper, education in that thing. That is why. So Keep there that are, out of mind that you need proper something. If okay. Harsha Bhogle would have thought I needed a proper schooling in cricket commentary, he would not have been there. If Amish Tripathi would have thought I needed a proper journalism course, then only I can write, right? First thing is when you're new, doing something new, and what you're thinking currently is new, right? Not many people do. There will be 1 or 2 people who would be doing it. Then how can you get proper guidance or proper structure, right? Maybe you will make this popular and create structure for others, Yes. right? So don't think that things have to be perfect before you jump in. That's important. And this is rule for everybody. Yes. The thing that you have mentioned in beginning, like, the ikigai, like you have different aspects. Like there will be a one thing which will paid you, and that will be a career, and there will be an another thing which will be, main your calling. So I think I have that calling, like what I wanted to do, and I also have, like, passion what I wanted to do for my own, like, which cannot be help me to earn a money. So that those two thing I have, but the thing is I am looking for, something which can be like, which I can make a career. So that Okay, is so my main भार्गव कोशिश करना है ये सारी चीजें blend हो जाए. blend हो जाए. ब्लेंड हो जाए. और फिर से मैं वापस से हर्षा भोगले का एग्जांपल दूंगी. पहले कोई उसको पे नहीं कर रहा था क्रिकेट कमेंट्री में. वो उसका पैशन ही था जो वीकेंड पे चल रहा था. बट एट वन पॉइंट आफ्टर 10 years 15 years he got something. तो किसी भी चीज को ना पहले तो जो भी तुम सोच रहे हो ना वो पेपर पे लिखा होना चाहिए. No, I always have habit to write it on paper. दूसरा जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है नई भी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो. उसको करो, उस एक्टिविटी को करो. जैसे फॉर एग्जांपल
मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जंप करने से पहले मैंने 2500 कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के, लेट्स से, Okay. right? You, before you are jumping into it, because you are still not a college kid currently, right? You already have a job, right? And you don't want to be in a position कि आप निकल गए और आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है ना? Because No, right now the position I am now in, like I can do it is like do and die situation for me, because before starting my graduation, I don't wanted to do anything in engineering or medical. It was like decision from my parents. So I have listened to them and I have given like 6 to 7 years to them. Now I'm in such a position like I don't care for anyone else. So I perfect. just तब तो wanted to सोचो ही do मत, my पहले तो own. इंजीनियरिंग को छोड़ दो. वो चली गई है वो, it is like I am not like I don't even want to say, but I have to say because मेरे पास कोई डिग्री नहीं है. That is my option. कुछ करना था ग्रेजुएशन तो चलो कर दिया. That is a part of graduation. Yes. Now it is like I have do and die situation because I have to think on my own. My family is also like conservative, so वो मुझे नहीं करने देते. उनका ऐसा है And कि you are उनको not in do and die situation. You are in a very nice situation. I wanted Because to you have get. to think of your own. Yes. Only thing is ना, आप भार्गव डर रहे हो खुद के डिसीजन को, आप ब्लेम किस पे करोगे? अभी तो मम्मी पापा पे कर दिया था पिछले 6-7 साल का, है ना? No, I just wanted to like something which will be, help me to for, basic, like basic survival. I can, move out and live on my own. Like वो That's डरने की situation नहीं है. I can do that. That is not an issue. But I just wanted to know whether I am right for it or not. That is why, I हाँ, asked, like, जब I तक think, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें हाँ, पता हाँ, नहीं that is. चलेगा. और वो वही. एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट हो, यू नो, नॉट नेसेसरी एक्सपेरिमेंट मींस कि है ना अच्छा, पूरा हाँ. जॉब करके ही देखो, राइट? Okay. Experiment could be a 2-day experiment, a 2-hour experiment. A experiment could be a 2-week experiment also. तो जितनी भी चीजें आपने लिख कर रखी है ना, उसको तो एक्सपेरिमेंट कर लो, चाहे जो भी बेस्ट अवेलेबल सोर्स आपको है ना, टूल्स मिल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के, राइट? वो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर लो, नो डाउट. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आई थिंक जूनो स्कूल इज नॉट वेरी लॉन्ग प्रोग्राम, राइट? It was stuck with, so you can happily experiment and get through it, be there. So that's important. And another thing, I can also recommend a tool called Ideal Career Test from careerguide.com. There's an Ideal Career Test. If you're not really sure in the direction, so this tool will help you understand what are the kind of careers you are fit for and you are cut for. So you can also go ahead with Ideal Career Test. It will tell about your interest, aptitude. Because remember, I told you in the very beginning, because we are so conditioned with the people around and the thought process around, People हम around us. अपनी Yes. reality खुद भूल जाते हैं. हमें लगता है उनकी reality हमारी reality है. So this psychometric test called Ideal Career Test by Career Guide will definitely help you. All right, So I it think will be kind of MCQ type, no? yes, Question. it will be MCQ test. Right. I can give Give a one result. time or multiple times. No, it's one time. Okay, sure. I will Right. try. All right. So Thank I think, yes, Sonal, calling can change over time. Yes, it can. Let's say my calling was to, my calling can change over time, because once you achieve the sustained level, right? So your calling could be something next then. It can. But yeah, it cannot be tangentially different. It can't be. It can be related. For example, if Kakshi is more towards glamour, modeling, beauty, right? All of a sudden she won't get into technology calling. वो नहीं possible है, right? वो है. So, all right, friends. Yes. Ma'am, actually, I'm confused with my calling. Like before, I was an assistant professor. I always want to be an assistant professor. So I did that. I became that. Now I went into the head marketing Which job. Which subject did you teach? It is a B.Tech, computer science. Okay, you teach computer science. Okay. Yes. And after that, I went into civil service because my parents pressurized to have to go for the preparation.
but unfortunately I didn't able to clear. Then right now I'm working as a head marketing in skincare brand. It is altogether a new field for me, but for 1 year I'm working in it. So right now my calling, if I will think calling that feel good is like reading books. So I have started Instagram page where I used to write about the books, whatever and I also launched my own brand because I want a herbal tea brand. So I registered the name. That also my calling. And I also want to be a life coach. So I keep on like attending the seminars, whatever seminar on the mind, on your mental health, whatever be the seminar, I just keep on attending. Okay. So Right. first thing now, you have identified 3-4 activities which you like, What I understood is you like reading. You also like explaining things, right? I also understand that you want to dabble something in entrepreneurship. Uh, how herbal tea came is again a story which you really need to think. But Ma'am, I love herbs. I just keep on reading the book on herbs. From there, I get to know that I want to make a herbal tea. Before, I used to make skincare products also. There, I switched to so I herbs. will stop you here. I'll stop you here. So you have some connection with nature, organics, and because you read, you want to do something like that. So maybe saying that herbal tea, because you said skin products, maybe tomorrow you might get some herbal snacks or healthy Yeah. snack, right? So you have an entrepreneurial mindset. And the entrepreneurial mindset is also leaning towards the nature, organics, herbal, right? Hold on to it. It's important to write these down. And then it's very important to understand your feel good factor. Now you created a product, right? I don't know. Have you created this herbal tea product or you Yes, registered? ma'am, I have created one sleep tea. I used to create two tea, but I have 100 plus recipes to have a herbal tea to create. Okay, having recipe is different. Creating, marketing, and selling is different. Reading and liking it is different. Ability to create something after reading is different. Okay, so there's a possibility you read, collect recipe, you can create, but you might not be cut for doing this competitive marketing, sales, generating revenue. We don't know currently, right? Even you don't know, even I don't know. And maybe you realize over the time that maybe I'm very good at collecting recipes, creating it, but I can sell these to a wholesale brand who can take it on their brand. That could also be. Ma'am, I have launched my brand name Henosis. I have already launched. I have registered the name. It is already like in 2 months, I will get the certificate. But you have to understand, Sonal, getting certification is not selling tea. There's a possibility your tea is just stacked inside the almirah, or only friends and families are taking it. Or there's a possibility you become a big brand, right? There are two different skill sets. They're totally two different skill sets. So what I understand currently now, you are more academically inclined kind of activities, more structured. My very short conversation which I have had with you, I would want you to further define this, further break it down, further define where we talked about flow of state, we talked about distractions, no distraction. And when I said, what would you fill in the dash? What did you write? Life coach and reading books. I love to read books whole day. I just see here also I'm surrounded with books only. It is always with me. Always Okay. with me. So interesting thing is a life coach, what's stopping you to become? There are certifications available. Even at Career Guide, there are certification to become a career counselor, which is a perfect fit when you have been an assistant professor. Now, becoming a life coach is nothing is stopping you. Whatever you're doing, your marketing role, your entrepreneurship role is just an add-on certification, which will give you a life coach, or you don't even need a certification. You need, first of all, to start with some kids, some juniors who would start taking you as role models, to take you as mentors. And friends, this is something I advise to everybody, and I want to close this session with this line. Can you find mentees for yourself? I did not say, can you find mentors for yourself? No.
मेंटीज हैं जिनको आप चीजें बताओ लाइफ के बारे में, वो कैसे करेंगे? कोई कजिन, कोई जूनियर, कोई नीस, कोई नेफ्यू? सोनल, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लाइफ कोच के Ma'am, लिए। I have already started with my telecallers and sales officers. I used to make them sit Perfect. down and I used to teach them what I have learned in the seminar. परफेक्ट। बट वर्क से बाहर निकल के, क्योंकि वो वर्क लेवल पे ही बात करेंगे, आप देखो आपके स्टूडेंट कितना आके आपके डिस्कस करते हैं, पुराने स्टूडेंट, फैमिली मेंबर्स, जो पीरियोडिकली आपसे मंथ में एक बार आकर 10 मिनट का पेपअप टॉक ले लें। ऐसे कम से कम 5 लोग आप बना लो अपने पास। Done. Have a mentee that changes life. And all right, I think there's too many responses coming in. I'm so sorry. I have to take it offline or maybe later on. We have overshooted the session, but this was lovely interacting. I think beautiful cohort, जिसने बहुत inner conversations, inner beliefs को रखा है सबके सामने, जो इतना आसान नहीं होता है करना। जब अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप सारे बैरियर्स ब्रेक कर लोगे और वो कॉलिंग तो मिलनी ही मिलनी है। All right, and guys, you can follow me on LinkedIn and we can chat up there from there onwards. Thank you everybody. Thanks Himadri, thanks Juno School. Over to you guys. Thanks, Surabhi. Thank you so much. I think it was really insightful because we didn't know that our learners have so many, interests which are from varied industries. Somebody wants to be a dancer, somebody comes from a pageant background, somebody wants to become an entrepreneur in so many different aspects. So I think today would be a day wherein a lot of us would go back and think through that what are we actually doing in life and what is it that will give that extra adrenaline or that the spark in the belly that, okay, this is something that I really want to do and probably I need to take baby steps in the right direction. And I think, Surabhi, you've been fantastic in giving those, short-term goals to people that if you have a dream, how do you go about pursuing that? Because we all dream big, we all want to make it big, but the challenge is that it gets diluted in the daily grind. So I think it's been really fantastic from all of us. In fact, really, Saturday, that's on a Saturday afternoon when people are actually busy with their own personal engagements. This shows the kind of commitment that we all have. I think thanks to you, Surabhi, and all our learners who did make an effort to join, not just join, but also share their dreams and, get insights and share their experiences. Lovely connecting with you guys today. And let's connect next Saturday, same time, 7 o'clock. Till then, take care. See you. Thank you, Surabhi ma'am. Thank you, sir. Thank you.